हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। जब हम कोड लिखते हैं जावा में तो हमारा कोड मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, करता है या कर सकता है, वेदर इट इज एट रन टाइम और वेदर इट इज कंपाइल टाइम। तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे सो दैट कि कोई भी एक्सेप्शन अगर थ्रो होती है उसके बावजूद भी हमारा प्रोग्राम या प्रोसेस रन करता रहे और एब्रप्टली स्टॉप ना हो। तो वी विल चेक दैट। बिफोर दैट एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन एंड व्हाट इज चेक्ड एक्सेप्शन। Second, we will talk about what is try catch finally and how we use these keywords to in our code to handle the exceptions. And third, customize exception, how to write the customized exception. Like for example, if I have my project जिसके अंदर मुझे यूजर को ये मैसेज देना है that if he is passing certain type of argument or which is not valid, तो I will have my own customized exception और वो run time पे throw होगा so that user will be knowing that okay, this is something they have to change. This is just a scenario. There are multiple use cases for customized exceptions. So let's begin. So first we'll talk about what is checked exception and what is unchecked exception. So in Java, we all know that uh, first, whenever we write any class, any program, we compile the program. So first of all, let's talk about the hierarchy. So the topmost hierarchy comes with the throwable. Throwable class is the topmost hierarchy in the exception world in Java. Under throwable, we have errors, and the other one is exceptions. So exceptions is a class in Java. Exception. Under exception, we have two types of exception: checked exception and unchecked exception. So if I tell you in a very layman word, checked exceptions are the exceptions which happens at the compile time, and unchecked exceptions are the exceptions which happens at the runtime. So the classes like which comes under checked exception are like SQL exception, IO exception, and like that. Similarly, in unchecked exception, we have runtime exception. We have null pointer exception. So you can see these exceptions will be taken care at the compile time itself. Compiler will tell, okay, this is your SQL exception being thrown up. Please handle this. While in the unchecked exception, this runtime exception, null pointer exception, these exceptions happens at the runtime. So they are unchecked at the compile time. So let's see how in the code we can identify. So when I talk about a compile time exception, if let's suppose I throw new SQL exception, so you can see the red mark. So the compiler is telling me that this is an error and it will not let me run the program, right? But at the same time, if I throw here runtime exception, see you can see it is not throwing any error now, but it will let me run the program. But at the runtime, this exception will be thrown and it will stop the program abruptly. So this is the difference between runtime exception and the like checked exception and the unchecked exception. Now the second thing comes up: try catch finally, and how we can handle the exceptions in Java using that. So now, why first thing let's discuss why do we need to handle the exceptions in Java? Why is this exception handling is so important in Java? So let me just write a program int value equal to I'll just try to convert a integer value int dot parse in
3। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे एक स्ट्रिंग वैल्यू है जिसके अंदर एक नंबर है, मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रही हूँ एंड मैं उसको प्रिंट करती हूँ sys out and I'll just paste here value of value. Okay, so now we'll just run this program. So you can see it is printing 3, so no problem, it ran fine. Now I will write here a string, any string value. It's a string, there is no number here, right? Now if I'll try to print this value, what it will do? If I'll run this, it thrown me error. And what error it is? Number format exception. It is saying this is not a number. It tried to convert this into an integer, but it did not identify it as an integer at all. So it gave me a number format exception, which is coming at the runtime. Now, why do we need to handle the exception? Okay, so let me just do one more thing. I'll just print a statement here which says this would be my last statement. Last statement. Now here you can see if I go one by one, it will first execute this line, then it will execute this line, and then it will execute this line. So if I got an error over here, this line will not be printed because of this exception. Now let's see what it prints, then I'll explain further. तो आपने देखा इसने कोई भी सिस आउट मेरा प्रिंट ही नहीं किया है। वाई? क्योंकि एक्सेप्शन मेरा इस लाइन में आ गया, तो जैसे ही एक्सेप्शन आया मेरा प्रोग्राम एब्रप्टली स्टॉप हो गया। इट डिड नॉट प्रिंट दिस वैल्यू, इट डिड नॉट प्रिंट दिस वैल्यू। अब यहाँ पे हम एक ट्राई कैच लगाते हैं, ट्राई। नाउ दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू हैंडल द एक्सेप्शन। आई नो कि मेरा ये वाला स्टेटमेंट एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो आई शुड handle this exception. So I'll put it number format exception here because I'm dealing with the numbers, and I just print this number here. Now this statement, number format exception, number format exception, and I'll just print that okay, this is not a number representation. So it is a like this is a customized message. So let's run this. Now you can see both the statements got ran. See, so there still is exception. It came here in the try block. इसको यहाँ पे exception throw हुआ, जैसे exception throw हुआ वो catch block में गया, उसने वो print कर दिया that okay this is the exception. It came out of the catch block and it also printed this value. It completes the program. So my program did not abruptly stop because of any runtime issue. So this is the advantage, or say this is the very important feature exception handling in Java, because of which we handle the exceptions at the runtime. So that कोई भी number runtime पे कोई number आ रहा है या whatever parameter inputs coming from user or any other program, तो runtime पे वो handle हो जाएगा and we will get the appropriate message कि हाँ अगर मेरा ये execution नहीं हुआ या कोई problem आई है तो वो क्यों आई है, but still the program will run completely. अब हम देखते हैं कि एक और वर्ड होता है इसके अंदर finally. So now what is finally? Finally कीवर्ड का जो relevance है वो ये है कि I am in finally block. तो फाइनली का जो रेलेवेंस है वो ये है कि अगर मेरा कैच मतलब लाइक ओके लेट मी जस्ट रिमूव दिस फॉर नाउ. ओके, फर्स्ट थिंग अबाउट फाइनली इज आप फाइनली को ट्राई के साथ डायरेक्टली यूज कर सकते हो. देयर इज नो नीड फॉर कैच. तो ट्राई के साथ या तो कैच होगा या फाइनली होगा या दोनों होंगे. दूसरी चीज, अगर मैंने यहाँ पे ट्राई लिखा है, अभी मेरा एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, राइट?
तो दैट मीन्स कि जब मेरा एक्सेप्शन थ्रो हुआ है तो मेरा प्रोग्राम अब्रप्टली स्टॉप हो जाएगा, राइट। बट इन केस ऑफ फाइनली मेरा प्रोग्राम स्टॉप हुआ, सी दिस स्टेटमेंट जो फाइनली के अंदर नहीं है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट जो प्रोग्राम मेरा फाइनली के अंदर है वो एग्जीक्यूट हुआ, और एक्सेप्शन जो थ्रो हुआ वो इस स्टेटमेंट के बाद हुआ। सो दैट मीन्स कि जब मेरा प्रोग्राम कंपाइल होता है और अगर उसको फाइनली कीवर्ड मिलता है तो इट मेक श्योर कि जो जो भी फाइनली के अंदर एग्जीक्यूशन होना है वो डेफिनेटली होगा ही होगा, इवन इफ देयर इज अ एक्सेप्शन दैट विल बी थ्रोन आफ्टर माय फाइनली का like the lines execution under the finally block. So this is the relevance of the finally block, and इसका mostly use होता है to close the connections, whether it is file connection or whether it is database connection. So वो जो close करने होते हैं connection, that all we close in the finally block. Okay, so this is one use of finally. Now again I'll put it here catch. Number format exception, I'll again print here. There is a number format exception. ओके नाउ एक और चीज कि हमारे पास मल्टीपल कैच भी हो सकते हैं, वी कैन हैव मल्टीपल कैच। तो अगर अगर मेरा यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, कभी को आईओ एक्सेप्शन हो सकता है, कभी कोई और एक्सेप्शन आ सकता है, बिकॉज रन टाइम पे डेटा में वेरी, तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा एक्सेप्शन चेंज हो सकते हैं। तो आई कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स टू हैंडल इट रन टाइम कि ओके अगर जो भी तरह का एक्सेप्शन होगा वो उसी ब्लॉक में प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास दो एक्सेप्शन है, तो अभी आप देखोगे कि एक्सेप्शन इज माई टॉप मोस्ट क्लास, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि एक्सेप्शन इज माई टॉप मोस्ट क्लास, number format exception will come under unchecked exceptions. So number format exception is a child of my exception class. So अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने पहले चाइल्ड क्लास का एक्सेप्शन थ्रो किया, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडल किया। बट अगर मैं इसको उल्टा करती हूँ, अगर मैं एक्सेप्शन को पहले लिखती हूँ और चाइल्ड जो कि मेरा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है उसको बाद लिखती हूँ, तो इट विल गिव मी कंपाइल टाइम एरर। तो दिस इज अनदर थिंग दैट वी हैव टू हैंडल द एक्सेप्शन इन अ हायरार्की फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। It should be first child then parent and exception to top है, but like if same level के होंगे then it is fine, like I can have in here null pointer exception, so this is acceptable because they are of the same level, there is no parent child hierarchy in this. So if they are at the same level then there is no sequence issue, but if they are parent child hierarchy then child and then parent exception will be handled in hierarchy, in the same hierarchy. So this is the third thing. So I hope these keywords are clear कि try catch and finally कैसे वर्क करता है। अगर इसमें कोई इशू होगा तो प्लीज पॉइंट आउट in the comment section, we can discuss this further. The the third and the last thing which we will talk about is how to write our customized exception. So I'll just remove this and I'll create another class. I'll name it as my exception. Even if you are creating any customized exception, please end it with exception, like my exception or throwaway exception or API exception or whatever. So it has to end with exception. That is the rule of the exception handling thing. So I got this exception. So very first thing is, whenever you create any customized exception, you have to extend exception class. Now here I'll just write something. Okay, so instead of this I'll just call my exception class.
and this is the statement I want to print, and this will throws my exception. And I'll not use the try catch block. Let me just write this, cache this, my exception. Okay, it will not come from here. So I'm just simply printing this, thrown away except my exception. So if you run this command, so it gave me my exception. So there is no message over here. It has just thrown my exception because this is my customized exception, and it is thrown at the 7th line. Now if I want to print some message, like for example, if I want to say, okay, this is message from my exception class. Now in the exception class we don't have any constructor. By default we have the default constructor, but now I want to have my constructor, so I will have public my exception, and here I'll print message, so it will be string message. And because it is extending exception, I have to write here super, because it has to inherit the message or inherit the classes from the exception. So that's why I've used super here. No change. So this message will go and print. So if you see, if I run this class, so it will say class. So it is saying this message is from my exception class. So you are just passing this message to exception inside the super. So now you can see how we created the customized exception, and I can use this like I can throw this my exception from whichever piece of code I want to do it. Right. So this is one thing, and then one more thing is there. We also have a constructor where we can throw message as well as throwable calls. Right. So here I'll be passing calls.
So this constructor will only pass the message, but this will pass message as well as what is the cause. And here we have to choose which constructor I want to use. So this will use only first constructor, but if I also want to pass the cause, I'll mention here what is the reason for this. User entered wrong data, or you can say, okay, this is not okay, this is not string type, new table, and inside this I'll or like let's suppose runtime exception. This has happened at the runtime. So this message will be printed that this message is for the exception class, and this is the reason that it has happened at the runtime. So I'll just run this again. So you see it gave me, पहले तो इसने इस मैसेज को प्रिंट किया कि ये मेरा एक्सेप्शन है, इस क्लास में ये एक्सेप्शन है, and it is caused by runtime exception. This is the cause. It can be like you can define it. You can क्योंकि यहाँ पे थ्रोएबल टाइप का है, दिस इज द थ्रोएबल टाइप, तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो क्लास थ्रोएबल के अंडर आती हो. तो यहाँ पे हमको सिर्फ इसको डिफाइन करना है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन. सो देर आर टू वेज एज आई सेट. वन इज बाय आइदर वी कैन चूज कंस्ट्रक्टर जिसमें 2 पैरामीटर्स पास हो, या फिर कंस्ट्रक्टर जिसमें 1 पैरामीटर पास हो. एनीथिंग वी कैन चूज. So one of them only we can use at a time, not together. So either one parameter constructor or 2 parameter constructor. So this is how we create the customized exception classes. If you want more details on this, we can discuss this in detail. But I hope a basic idea आपको clear होगा कि exception handling होती क्या है, क्यों हम exception handling इतनी मतलब relevant है जावा के अंदर, why we should use it, और क्या क्या ऑप्शंस है. लाइक ट्राई कैच फाइनली तो है ही, बट अदर देन दैट वी कैन ऑल्सो हैव कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन एज वेल. सो आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल. अगर इसमें कुछ क्वेरी है या कोई डाउट है या कुछ डिटेल्स यू वांट मी टू focus on, please feel free to leave a comment in the video. Thank you.